I mean, you've also faced bullets, Yeah, right? I've heard कि जो आपके podcast में that you've yeah, actually faced yeah, 30 bullets. yeah, yeah. Uh, what is your mindset at that point of time? And, like in my head, I'm thinking at that point, are you trying to survive? Do you think about surrendering? Do you want to escape? Hmm. Or do you just want to fight back and kill the other person? What goes off in your mind when this is happening, and how do you get through it? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि the guy who fired 30 rounds at me was closer than what you are sitting. He was like over here. So the point is that he opened up. That time you don't have. It is uh, the concept of muscle memory. So he was like that standing and my face was tilted. मैं इधर को देख रहा था तो मेरा weapon, मेरा जो natural alignment था with my weapon, I checked the underneath area. देन आई टर्न बैक. कई बार आपको ऐसे पेरिफेरल विजन में लगता है कि कोई खड़ा हुआ है, Right. तो मैं पूरा टर्न कर चुका था, पूरा नहीं पर मैं आई वाज लाइक दिस हाफ वे पीछे. So I just looked at this guy standing and he opens up. So I also opened up the fire, but my bullets went in this direction. It could have never hit him because I was not in the Position. angle only on firing. So जो पहला लेसन लर्न है कि जो आपने जितनी भी ट्रेनिंग की है वो it should culminate into at least firing properly. At least I fired back. I didn't freeze. बाकी जो रिएक्शन है कि क्या सोच रहे थे क्या नहीं किया, बिकॉज उसके बाद मैंने अपने बडी को, मेरे को आई रिमेंबर दिस मच बिकॉज इट ऑल हैपेंस इन 3-4 seconds में हो जाता है. इट डजंट टेक मच टाइम. 4-5 seconds इज मैक्सिमम. आई पुट माई बडीज हैंड एंड वी pushed out. There was a window behind us. We fell 10-12 feet down. He lobbed a grenade. Those splinters are still in my leg. And then whole night, because my buddy was more injured, तो उसको evacuate कर दिया था. But then one guy tried to run. We shot him in the window. There were two guys inside. तो एक को हमने विंडो पे मार दिया था. वो दूसरा जो मेन बंदा था, वो जिसने मेरे पे फायर किया था, वो पूरी रात ही फायर्ड. तो मेरे इसमें चोट थी एंड इट वाज मंथ ऑफ समवेयर इन नवंबर. सो जब आपके अंदर ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स जाते हैं तो वो जैसे आई मेड लॉट ऑफ टैटूज. जब आप टैटूज बनाते हो और एक वो जो नीडल्स का जो दर्द होता है उसको आप 10 times एम्पलीफाई कर दो, सो इट कीप्स ऑन हर्टिंग. Oh, So right. inside, so there's there's nothing more, because at that point of time, because your body is warm and you start realizing that you have been hit somewhere, but it is not that pain, but it is taking the main aim of human being is to survive at that moment. Yeah. फिर धीरे धीरे फिर आप you are firing also, your mental faculties are aligned towards that. So couple of days, और जब वो इंसिडेंट खत्म होता है उसके बाद देन यू स्टार्ट कि अच्छा ये मेरे को डैमेज हुआ है एट द हीट ऑफ द मोमेंट इन दैट नाइट, बिकॉज दैट गाय ही ट्राई टू रन ड्यूरिंग द नाइट. सो उसने 2-3 कैटल और गाय को बाहर निकाला, तो आई हैड टू शूट द कैटल. देयर वाज नो अदर ऑप्शन बिकॉज आई could not let him go. In the morning, when we had reinforcements, we blew the house and he died. But the point is, at night, nobody else could come closer because I could not call anyone क्लोज टू मी ओनली बिकॉज वो फायर करता तो किसी को कैजुअलिटी हो सकती. तो इट्स वन एंड ही एंड मी फॉर द होल नाइट. सो नाउ माई इट वॉज माई लकी डे. आई से मैं बोलता हूँ कि भगवान पे विश्वास होना चाहिए. इट वॉज माई लकी डे दैट डे. आई कुड हैव बीन शॉट ऑन द फर्स्ट, इन द फर्स्ट, the first burst of fire when the first bullets Right. were fired. I could have got killed, but that is how we are having this conversation today. And And that is still, luck. So you cannot overtly say कि luck doesn't matter, but it is, yeah, if you have the lessons drawn as your will to survive is always has to be of the highest order. right, आपको लाइफ में कभी चाहे पैसा आ जाए चले जाए, डेथ आ जाए चले जाए, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. होप इज कीप्स यू अफ्लोट. right. These are universal principles, whether it's a soldier or a educator like you. So I think so that is how it survives. It keeps on going.